Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear student. Hopefully you are well and doing well. Uh, today we discuss. Today we start the lecture number online session of lecture number 4, which cover the week number 4 course in mathematical modeling. Today we discuss topic of today is mixture and the modeling and solution of the mixture. As usual, if you have any question regarding this lecture, any queries, any suggestion, so feel free to contact on our WhatsApp group and for the live session on Zoom ID, which is mentioned below. Okay, let's start with the lecture. Okay, mixture. Mixture, the mixing of two salt solution of different concentration gives rise to a first order differential equation for the amount of salt contained in the mixture. Let us suppose basically mixture जो है नाम से ही जाहिर है कि we mixing some things. In this case, we use the salt solution, but it is not bounded for just salt. You can use any other solution in fluid, okay? But in here we just say that two salt solution. For this one, let us suppose that a large mixing tank. We have a large mixing tank initially hold 300 gallons of brine. What do you mean by brine? Brine is that is water in which a certain number of pounds of salt has been dissolved. It mean कि ब्राइन जो है ना ये एक किस्म ला महलूल होता है, सॉल्यूशन होता है जिसमें हम हमारे पास वाटर जो है ना वो डिज़ोल्व हो चुका, वाटर में जो है ना वो हमारे पास salt dissolve होता है. Okay, another brine solution is pumped into the large tank. Okay, at a rate of 3 gallons per minute. और हमारे पास एक और ब्राइन सोल्यूशन है जो कि पंप हो रहा है, जो कि हम फिलअप कर रहे हैं, जो कि हम पुट अप कर रहे हैं इस लार्ज टैंक में, और उसमें क्या है 3 गैलन पर मिनट. वी पुट द रेट ऑफ we put that brine solution into the large tank with the rate of 3 gallons per minute. Okay, the concentration of the salt is in this inflow is 2 pounds per gallon, and ये जो हम पुट कर रहे हैं इसमें बेसिकली साल्ट जो है ना वो 2 पाउंड्स पर गैलन सॉल्ट है, ठीक है, मिक्सअप किया हुआ है. But when the solution in the tank is well styled, it is pumped out at the same rate as the entering solution. See figure. Okay, let's see this figure. Okay, look at this one. In this figure, we see that this is a large tank which is already 300 gallon brine solution. That mean they have some water, and we put some salt in this water, and we already make a solution and brine, and we said it brine solution. Okay, but we put another brine solution from this one area, and which is at the rate of 3 gallon per minute. इन यहाँ से जो वाटर आ रही है, यहाँ से जो सोल्यूशन आ रही है, बेसिकली ब्राइन सोल्यूशन, वो 3 गैलन पर मिनट आ रही है, एंड ये वो इसके साथ मिक्सअप हो रहा है, सही है. और इसके साथ मिक्सअप के बाद फिर यहाँ से जो आउटपुट है वो भी हो रहा है. और आउटपुट क्या है? द आउटपुट रेट ऑफ द ब्राइन इज़ 3 गैलन पर मिनट. आउटपुट रेट भी 3 गैलन पर मिनट है. लेकिन यहाँ पर एक और बात कि यहाँ ऑलरेडी जो मिक्स ग्रेटर टैंक है इसमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, यानी हमने वाटर में जो है ना वी मिक्स some salt into the given water which is 300 gallon, and इसमें जो हमने सॉल्ट मिक्सअप किया हुआ है वो कुछ अलग रेट है. ओके, and I will mention in
प्रीवियस पेज, बट यहाँ पर जो मिक्सअप है वो किसी और रेट से है, लेकिन यहाँ से जो मिक्सअप आ रहा है, जो ब्राइन आ रहा है, जो ब्राइन सोल्यूशन आ रहा है, वो 2 गैलन पर 2 पाउंड साल्ट जो है ना वो पर गैलन है। इट्स मीन कि अगर यहाँ पर 1 मिनट में 3 गैलन आ रहा है, तो उस 3 गैलन में 2 गैलन जो है ना 3 to the 6, ओके, तो 6 गैलन जो है ना वो सॉल्ट भी आ रहा है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, तो यहाँ पर देखो ओके, सी फिगर 1, वी डिस्कस फिगर 1। sorry sorry for interruption. uh, if AT denote the amount of salt, this AT, uh, you can use AT, DT, anyone. This is the amount of salt measured in pounds in the tank at time t. Then the rate at which AT change is the net rate will be rate of change with respect to t. This will be equal to input rate of salt minus output rate of salt, that is Rn minus R out. This is basically the rate change of salt in the given tank, in the given mixing tank. Okay, the input rate in which salt enter the tank is product of the inflow concentration of salt and the inflow rate of fluid. Note that Rn measure the pound per minute. Okay, Rn basically the concentration of salt in inflow and input rate of brine. ओके, यानी मतलब ये है कि जो इन हो रहा है वो बेसिकली 2 पाउंड पर गैलन साल्ट मिक्सअप हो रहा है, और साथ में 3 गैलन भी मिक्सअप हो रहे हैं, सही ना। तो अगर 2 पाउंड 1 गैलन में, तो 3 गैलन में 6 पाउंड आएंगे, तो इट्स मीन के 6 पाउंड पर मिनट वो साल्ट इनपुट हो रहा है इनटू द mixing tank. Now, since the solution is being pumped out, okay, in a mixing tank, if this R in and already salt solution, brine solution, where it exists is already, so both are mixing, and after that mixing, some amount of the brine solution is pumped out. Okay, so pumped out of the tank at the same rate, that is pumped in the number of gallon of brine in the tank at time is constant 300 gallon, यानी जो निकल रहा है वो भी 3 गैलन 3 गैलन पर मिनट निकल रहे हैं। तो hence the concentration of the salt in the tank as well as the outflow is this one. Okay, ये किस तरह, देखो ये कंसंट्रेशन है ना, AT, दिस इज द अमाउंट ऑफ साउंड डिवाइड बाय 300 जो है ना वो क्या है, वो बेसिकली ऑलरेडी जो ब्राइन सोल्यूशन है, यानी जो हमने जिसमें सॉल्ट को पुट किया हुआ है वो सोल्यूशन है। तो ये 80 जो है ना ये सॉल्ट की मिकदार है और ये ऑलरेडी मौजूद है, तो इस 80 को 300 पे डिवाइड कर ले, दिस इज़ द कंसंट्रेशन रेट। इट्स मीन के इतने मिकदार में जो है ना वो टैंक के अंदर सॉल्ट मौजूद हैं। ओके, यानी सॉल्ट जो है ना वो मिक्सअप हो रहा है। सो द आउटपुट रेट ऑफ द सॉल्ट विल बी आर आउट, द कंसंट्रेशन of salt in outflow will be 80 divided by 300 pound per gallon। ओके, क्योंकि इतने अमाउंट में साल्ट इसमें है तो इसको आप 300 पे डिवाइड करें, क्योंकि 300 गैलन वाटर जो सोल्यूशन जो है ना वो ऑलरेडी टैंक में एग्जिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस बात को आप ज़रा सीखे कि देखो ये इस फिनोमेना के लिए हम कर रहे हैं मॉडलिंग, सही है ना। तो अगर टैंक में ऑलरेडी 300 के अलावा कुछ और मौजूद हो, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 200 gallon of brine solution or more than 200, so you put that particular amount here।
ओके, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ द ब्रेन, दैट इज 3 गैलन पर मिनट। तो ये आउटपुट है, तो ये 3 और ये 300 कैंसिल होके 100 आ जाएगा। सो आर आउट जो है ना वो 80 डिवाइड बाय 100 पाउंड पर मिनट। ओके, द नेट रेट जो कि हमने ए में 1 में जो मेंशन है डी ए बाई डी टी, दिस विल बी आर इन माइनस आर आउट। तो आर इन और आर आउट को आप पुट कर ले यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ यू बन जाएगा 6 माइनस ए डिवाइड बाय 100। ए टी आप लिख ले या ए लिखें, बोथ आर करेक्ट। आर आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी प्लस 1 बाई 100 ए is equal to 6. So this is the basically the first order differential equation for such kind of mixing mixture. So this is the mathematical modeling for the mixing tank. तो यहाँ से आप लोगों ने सीखा कि किस तरह हमने इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की, कि हमारे पास वाटर भी है और उसमें साल्ट मिक्सअप हो रहा है, और उससे वही अमाउंट ऑफ जो ब्राइन सोल्यूशन बनता है, और वो सोल्यूशन जो है ना फिर आउटपुट हो रहा है। तो इन दोनों का जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो कुछ यूँ बन जाता है। इसकी मदद से अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। सो आई दिस इज द फिगर which I use, which is we discussed already. Okay, now we have example. We have a large tank which have 300 gallon of brine solution. Salt was entering and leaving the tank. A brine solution was being pumped into the tank at the rate of 3 gallon per minute. It mixed with the solution there, and then the mixture was pumped out at the rate of 3 gallon per minute. यानी सेम टू सेम जिस तरह हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही यहाँ पर क्या है क्वेश्चन भी आया हुआ है। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी रिपीट इन आवर एग्जाम और वी रिपीट इन आवर होम असाइनमेंट एंड वी रिपीट इन आवर assignment. Okay, so you must be familiar with the modeling, कि अगर हमारे पास 300 गैलन ना हो और कुछ और हो, 3 गैलन पर मिनट ना हो कुछ और हो, यानी मतलब है कि छोटा पंप लगा हो और बड़े पंप से पानी निकल रहा हो, या बड़ा पंप लगा हो छोटे से निकल रहा हो, तो ये सारे जो है ना वो फिनोमेना है। यू मस्ट बी फेमिलियर, यू मस्ट ट्राई it by at your home. Okay, the concentration of the salt in the inflow or solution entering was 2 pound per gallon. Let us pose the question: if 50 pound of salt were dissolved initially in the 300 gallon, okay, how much salt in the tank after a long time? यानी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा उर्दू में समझा देता हूँ। हमारे पास के फिगर में समझाए तो हमारे पास ये टैंक है, मिक्सिंग टैंक, इसमें 300 गैलन वाटर पड़ा हुआ है। लेकिन इस वाटर में हमने यहाँ पर मेंशन है कि वी मिक्स 50 pound of salt were dissolved. We dissolve 50 pounds of salt, यानी इस 300 गैलन में हमने 50 पाउंड साल्ट जो है ना वो मिक्सअप किया हुआ है इनिशियली। ओके, इसमें जो है ना वो इनपुट आ रहा है वो 3 गैलन पर मिनट आ रहा है, और साथ में जो है ना वो 2 पाउंड पर गैलन जो है ना वो सॉल्ट भी इंटर हो रहा है। तो फिर ये दोनों मिक्सअप होके एक नया चीज़ बना लेंगे। यानी मतलब ये है कि फिर जो गैलन और उसकी जो मतलब है कि वो अमाउंट और ये अमाउंट मिलके एक अलग मिक्सर बनाएंगे, जिसमें मैं भी कि 300 गैलन में 50 से ज़्यादा पाउंड सॉल्ट मिक्सअप हो, या मैं भी लेस में भी ज़्यादा मिक्स हो आप। ओके, और फिर वही मिक्सअप जो है ना यहाँ से निकल रहा है। ओके, सो नाउ इफ अच्छा, हाउ मच सॉल्ट इज़ इन द टैंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम गुजरने के बाद जो है ना टैंक में कितना सॉल्ट होगा। Initially 50 pound of salt is dissolved in a mixing tank. So keep these assumptions and see how to solve this question.
एज यूजुअल लेट ए टी इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट टाइम टी। हमने ए टी जो कि फंक्शन है टी का, दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट टाइम टी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट आर एन 3 गैलन पर मिनट एंटर हो रहा है और उसमें जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो 2 पाउंड एल, ये एल बी होना चाहिए, मैंने एल एन लिखा है, सॉरी फॉर देट। ओके, मस्ट करेक्ट दिम, पुट दिस एल बी। So this is LB. Okay, 2 pound of per gallon salt भी मिक्स हो रहा है, so 6 गैलन पर मिनट जो है ना वो सॉल्ट एंटर हो रहा है। एंड आउट कितना हो रहा है, तो आउट के लिए देखो आप इस तरह करें, दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ओके, initially we know but we did not put that value. Okay, we just put the 80, the 80 divided by 300 gallon, so if and multiply 3 गैलन पर मिनट, क्योंकि 3 गैलन पर मिनट जो है ना वो एंटर सॉरी आउट भी हो रहा है, so ये दोनों कैंसिल हो गए, 80 डिवाइड बाय 100 बच जाएगा। एंड दिस इज आल्सो पाउंड, नॉट एल, एंड दिस इज आल्सो एल बी, and this one be also LB. Okay, so the relation which is the amount of salt with respect the rate of change in the amount of salt with respect to time is equal to Rn, कितना n हो रहा है और कितना आउट हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास 6 आ जाएगा ऊपर से और यहाँ से हमारे पास 8 डिवाइड बाय 100, and this is one equation number 1. Initially 50 pound of salt is dissolved, so A of 0 is equal to 50, and this is equation number 2. This is the initial condition that initially 50 pounds of salt is dissolved in the given mixing tank. Okay, so equation 1 which is dA by dt is equal to 6 minus A divided by 100. You can solve this is a differential equation. You solve this differential equation by any method. यहाँ तो मैंने वेरिएबल से प्रोबेबल से किया है, लेकिन आप लोग इसको बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सॉल्व कर सकते हो, बट वी आर नॉट इंटरेस्टिंग टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यू आप जस्ट सॉल्व कर ले। डी ए डिवाइड बाय 6 माइनस ए डिवाइड बाय 100, ये मैंने इस साइड पर शिफ्ट कर, डी टी को उस साइड पर, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ओके, नाउ इफ यू टेक इंटीग्रेशन वी गेट दिस वन। अब हमारे पास डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो -1 और 100 आता है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको मैंने यहाँ पर भी लिखा, यानी मैंने क्या किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और 100 पे डिवाइड भी किया, लेकिन -100 के साथ। तो अब ये फार्मूला बन गया कि -100 अपनी जगह पर, ये आपके पास आ जाएगा log 6 माइनस ए डिवाइड बाई 100, और यहाँ से सिंपल t आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय -100, वी गेट t by -100 and c by -100. To remove this logarithm we take exponential on both sides. इस साइड पर भी एक्सपोनेंशियल ले लिया, इस साइड पर भी ये कैंसिल, a माइनस ए डिवाइड 6 माइनस ए डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी माइनस टी डिवाइड बाई 100 इंटू ई पावर माइनस सी डिवाइड बाई 100. ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100, सो वी गेट 600 माइनस ए और 100 मल्टीप्लाई दिस टर्म इंटू दिस टर्म। ये आपके पास होल कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए मैंने इसको -c1 का नाम दे दिया। ओके, ये माइनस क्यों दे दिया, आप कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्लस भी देते हैं इट्स ओके। मैंने -c1 दिया है, दे सकते हैं आप लोग, मैंने सिर्फ इसको बनाने के लिए, अदरवाइज इफ़ यू पुट जस्ट c1 सो यू गेट द सेम रिजल्ट। ओके, इट डजंट मैटर। ओके, ये मैंने बस इस माइनस को यहाँ से ख़त्म करने के लिए, फिर आपके पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, बट इट डजंट मैटर। अच्छा, ये आपके पास a 600 प्लस c1 एंड दिस वन। अच्छा, फिर आपके पास क्या आता है, नाउ पुट इनिशियल कंडीशन विच इज़ a नॉट इज इक्वल टू 50, a नॉट इक्वल टू 50 मीन when t इक्वल टू 0, so put t is equal to 0 in this equation.
अच्छा, आपने इस इक्वेशन में टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर ये ए बेसिकली ए ऑफ टी है, दिस इज जस्ट ए ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी एन इक्वल। अच्छा, सो हम टी की जगह ज़ीरो पुट कर लेते हैं और यहाँ पर भी टी की जगह ज़ीरो पुट करते हैं। ई पावर ज़ीरो इक्वल टू वन, तो ये वन आ जाएगा। ये इसकी जगह इसकी फुल वैल्यू जो है ना वो हमारे पास 50 है, तो आप 50 पुट कर लें। सो 50 माइनस और 600, so the value of C1 become minus 550. Put this C1 into equation number 3 and the equation number 3 become like this. A of t is equal to 600 minus 550 e power minus t divided by 100. Now this is the equation, this is the solution for the given tank, for the given problem. Okay, and now how much salt is the tank after a long time? लॉन्ग टाइम मीन के अब लॉन्ग टाइम का मतलब ये है कि बहुत टाइम के बाद। अब टाइम कितना है, वी कैन नॉट we cannot clear about that कि how many time, but a long time. So along in mathematics we take infinity. Okay, so we put if t approaches to infinity, then what will be the amount of salt in the given tank. So हम इस इक्वेशन में t की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं। यहाँ पर भी मैंने इन्फिनिटी पुट किया है, यहाँ पर भी मैंने इन्फिनिटी पुट किए हैं। तो यहाँ से इन्फिनिटी डिवाइड बाय समथिंग इन इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी ई पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ये टोटली टर्म आपके पास ज़ीरो होगा। सो ये भी फिर मैंने n लिखा है, ये भी एल बी है। ओके, अच्छा, सो एट इन्फिनिटी 600 pound salt will be present in the mixing tank, यानी 600 पाउंड सॉल्ट जो है ना वो प्रेजेंट होगा गिवन मिक्सिंग टैंक में। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि इन्फिनिटी तक तो हम नहीं रुक सकते। यानी मतलब इस क्वेश्चन का ये हुआ कि फॉर अ लार्ज टाइम, दैट इन्फिनिटी मीन कि वी हैव अ लार्ज ऑफ टाइम, यानी we cannot approach to infinity. Okay, so we must need to find the approximate value which is near to 600 pounds. For this purpose we need approximate solution. So for this purpose you must put t equal to 50 in the given equation, in this equation. Okay, in this, if this is equation number 4, तो अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 4 में, ये आपका इक्वेशन 4 हो गया, अगर आप लोग इक्वेशन 4 में t इक्वल टू 50 पुट कर लें, ठीक है, इस t की जगह 50 पुट कर लें, तो आपके पास आप सॉल्व कर लें, so you get a numerical value which is 266.41 पाउंड। इसका मतलब ये है कि 50 मिनट्स के बाद जो टैंक में सॉल्ट होगा वो 266 पाउंड होगा। इफ़ यू पुट 100, सो वी गेट 397.67। इट्स मीन कि आफ्टर 100 मिनट्स the amount of salt in a mixing tank will be 397 pound, and after 200 minutes the amount will be this is 3 this is not 225 okay, ये तो कम हो गया, तो ये मैंने गलत लिखा है मेरे ख्याल में। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू पुट, यहाँ पर गलती थी वो मैंने करेक्ट किया कि आफ्टर 200 मिनट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ मिक्सिंग टैंक विल बी 525 pound, and after 300 minute it will be 572 pound, and after 400 it will be 589, and after 600 minute it will be 598. तो देखो 600 मिनट के बाद इतने अमाउंट आ गया, इट्स मीन दिस इज नियर टू 600. ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 600 बट इट इज़ नियर टू 600. तो अगर हम लोग इस टाइम को, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम का मतलब ये है कि बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होगा, सही है ना, सो वी नीड टू
न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसके लिए हमने ये वो बना लिया। लेकिन ये किस तरह बनता है, दिस इज़ वेरी सिंपल। आप लोग इस क्वेश्चन 4 में इस टाइम के वैल्यू को वेरी करते जाए एंड you will get the amount of 80 at that time. Okay, so बेस्ट ऑफ लक। आज का लेक्चर है यहीं पर वाइंड अप होता है। एज यूजुअल, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, so you can feel free to contact me on our WhatsApp group or on, for the if you have seriously problem in any in any part of the lecture, so for live session you can call me on our Zoom ID. Okay, best of luck.